Hi everyone, Ashish Kyal here. Welcome to Ashish Kyal Trading Gurukul. It's fantastic to have all of you over here. Very good afternoon, good evening to Nilesh, Paras, Abu, Akshay, everyone. Very good evening to each one of you. Bidyut, Nalini, it's great to have you all over here on Friday at 4 p.m. And what a week it had been. It had been a fantastic week. A lot of things happened in this week. And I just want to know from all of you if you are able to hear me out, see me clearly. Every one of you, are you here with me and understanding what I am talking? समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो चलिए आगे बढ़ते हैं. Friday at 4, it's fantastic. And what a week it had been for reason because this week again, अगर आपने लास्ट टाइम अटेंड किया होगा, मैं खिलाड़ी नंबर 1 जीता था. ये वीक वापस से दिस वाज अ खिलाड़ियों का खिलाड़ी वाला शो which I won again this time because I have clearly given the calls. अगर आप फॉलो कर रहे थे तो आपने देखा होगा बहुत ही शानदार गया ये हफ्ता भी. और इंटरेस्टिंग चीज ये है, सारे जो कॉल्स दिए थे मैंने वो सब कॉल्स बाय साइड पे थे. So all of those things that we have given on the buy side and those stocks have worked like magic. निफ्टी पे क्या होगा आने वाले वीक में, वो पहले मैं आपसे पूछता हूं, बाद में मैं आपको बताऊंगा मुझे क्या लग रहा है निफ्टी का क्या होने वाला है इन द कमिंग वीक. सो हियर इज द poll that I am taking, and people who are there on YouTube, how are you people doing? Are you doing fantastic? Every one of you is doing wonderful on YouTube. I need interaction people. Friday at 4 live है ये. अगर वीडियो होता तो समझ में आता है, लेकिन अगर हम लाइव है तो इंटरेक्शन से बहुत एनर्जी मिलती है और मैं उतना ही ज्यादा आपको चीजें एक्सप्लेन कर सकता हूं. सो पीपल ऑन यूट्यूब, आई नीड अ बिग हाई फ्रॉम यू ऑल एंड आई वांट टू नो इफ यू आर एबल टू if you want to participate in this poll which is going on right now. I'm going to copy across this poll link, share it across with you all, and चलिए बहुत ही मजा आता है मुझे ये फ्राइडे एट 4 करने में, इंटरेक्शन करने में, बिकॉज आई एंजॉय टॉकिंग अबाउट मार्केट्स. तो आने वाले वीक में निफ्टी का ट्रेंड क्या लग रहा है? वाओ, दैट्स एन इंटरेस्टिंग आउटकम गाइस. You'll really enjoy if I show you the outcome. Chat पे लिखिए क्या लग रहा है आपको कि आने वाले वीक में by certain by Friday do you think Nifty will close positive या by Friday you think Nifty will close negative? तो लिखिए आप पोल में, और साथ ही में आने वाले वीक में क्या हो रहा है वो देखते हैं. तो चलिए मैं ये पोल एंड कर रहा हूं. बहुत ही इंटरेस्टिंग आउटकम है दोस्तों. ये बना डोजी का मतलब है कि जो लोग, आधे से ज्यादा लोग सोच रहे हैं, 50% वाले लोग सोच रहे ऊपर जाएगा, 50% सोच रहे नीचे जाएगा. मतलब है स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, which means मार्केट का ट्रेंड है साइडवेज. दैट इज व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस. सो बहुत ही इंटरेस्टिंग पोल था ये, एंड थैंक्स फॉर एवरीवन फॉर शेयरिंग इट अक्रॉस योर व्यूज. लुक्स लाइक वी आर गोइंग टू मूव इन अ रेंज एज ऑफ नाउ. आज बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट डे भी था. 9:30 का एक टाइम दिया था मैंने कल के ट्वीट में, एंड ऑल्सो मेंशन अबाउट दैट टाइम इन द मॉर्निंग. एंड 9:30 पे निफ्टी फॉर्म्ड अ लो एट 16,995, बाउंस बैक फ्रॉम देयर बाय अराउंड 100 पॉइंट्स एंड देन ब्रोक बिलो दैट 16,995. तो जो टाइम के हिसाब से वहां से एक बाउंस मिलना था वो मिल गया. उसके बाद में उसने वो लेवल को ब्रेक कर दिया. इसका मतलब हुआ नेक्स्ट 2 से 3 दिन तक अभी निफ्टी का ट्रेंड होगा बेरिश शॉर्ट टर्म. 17,000 had a very high open interest, that is also broken, and that is why the trend for Nifty even on 17,000 open interest की एनालिसिस के बेसिस पे भी बेरिश है. I will also talk about wave perspective because from the wave perspective, combining that with Ichimoku cloud, what do I see the markets is going to do? I'm going to share that across also with each one of you. So very quickly let me just शेयर अक्रॉस. फर्स्ट, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगा, एक खुशी का मौका है बिकॉज नेशनल चैनल पे जीतना खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज पे कॉन्जिक्यूटिव सेकंड टाइम, इट्स नॉट एन इजी थिंग, राइट? सो दिस वाज द इंटरव्यू व्हिच आई हैड जस्ट बिफोर दिस वेबिनार स्टार्टेड एंड वोन अगेन. साथ ही में यहाँ पर देखिए जो स्टॉक्स ने अच्छे खासे रिटर्न दिए उसमें से यहाँ पर CSB बैंक, ओके, CSB बैंक है विच इज क्लियरली सीइंग हियर. साथ में साइंट है जो आज दिया था 4% ऊपर था.
राउट मोबाइल, लेटेंट व्यू, एंड बहुत इंटरेस्टिंग क्या है इसमें आप बता सकते हैं, व्हाट डू यू सी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन दिस स्टॉक्स दैट वाज गिवन व्हिच हैज वर्कड? आईटी काउंटर्स, ये था यहाँ पे आईटी काउंटर्स, वेयर यू कैन क्लियरली सी सायंट, राउट, लेटेंट, तीनों आईटी में से थे। तो मतलब ये वीक में आईटी में फिर भी सपोर्ट है, लेकिन बाकी स्टॉक्स में नहीं था। तो इधर पैसा बना, सीएसबी बैंक में बना, बिकॉज वो गोल्ड रिलेटेड बैंक है, जहां पर गोल्ड फाइनेंसिंग के ऊपर है, और गोल्ड हमें पता है 60,000 के पार गया था, तो वो स्टॉक में भी अच्छा रिटर्न बना। तो इंपॉर्टेंट ये भी समझना होता है कि कौन सा सेक्टर जाएगा। और अगर आप मेंटरशिप ग्रुप में है तो दोस्तों, कल मैं वापस से आप लोगों के साथ में ये स्टॉक्स के ऊपर कैसे एल्गो क्रिएट करना है वो हम शुरू करेंगे कल। तो है कोई मेंटीज जो इस बैच का है? वी आर गोइंग टू लुक एट दीज stocks. How did I select this stock? What was the key factor that I looked at this stock? And we are going to do that. So be prepared tomorrow at 10 till 1. I'm going to do that for the mentees. So this was just very quickly I'm sharing across on the view, and thank you everyone for your wishes, for your blessings. This would not have been possible without everyone of you. So great, Rashmi, you are there, Pooja is there, Isha is there, बहुत सारे जन है. So we will be discussing about this in tomorrow's session. Just keep in mind we are going to have lots to do in this session. तो चलिए अभी चलते हैं, यहाँ से मैं मूव करता हूँ, वापस से चलते हैं मेरे चार्ट पे, देखते हैं कि आने वाले वीक में निफ्टी क्या लग रहा है और कैसे ये टाइम के बेसिस पे, कैसे वेव काउंट के बेसिस पे, इचिमोको क्लाउड के बेसिस पे हम ये डिराइव कर सकते हैं. तो लेट मी जस्ट वेरी क्विकली शेयर अक्रॉस माय स्क्रीन हियर. Are you able to see? Thank you, Amrita, for the wishes. Achandra, thank you very much. And I'm blessed to have all of you over here, because of whom I was able to win again. So are you able to see my chart of Nifty here? तो पहले तो अब अगर डेली चार्ट पे देखेंगे, डेली कैंडल निफ्टी की बेरिश है. Are you able to see this? And if you are following me over the time, I have been mentioning the level of 18,134 will not be taken out until 18th of April. और ये मैं अभी नहीं कह रहा हूं, this I am talking about since some time. This is on the basis of time cycle. On the basis of time cycle I am talking about this. Next, we can clearly see it here that over here we have a huge hurdle at 17,794. वो तो बहुत दूर हो गया. और एक मेजर हर्डल जो निफ्टी पे बनकर आया है, that is at 17,200 220 के आसपास. 17,227 is a Gann square of 9 level, and एक भी बार निफ्टी उसके ऊपर जाने में अटेम्प्ट में फेल हो गया. Now again it has started showing move on the downside, and आज का सेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है. Firstly, today's high might be protected for next 2 days. So for option sellers, it is very important to understand this information, because as per time cycle, today's high might not be taken out for next 2 days. That is what is the first information that I am giving you. So Wednesday को अगर expiry है, can I say this is going to help me which option to write to generate that passive income? Guys, I'm asking you, can I say that by knowing this information, I can say which options I can write to generate that passive source of income from option trading by simply option selling? And if you are following me on Twitter, I've been constantly telling you that this is not option buyers market. Do you remember? I've been saying this is an option sellers market, and that's why buyer will make money only scalping or फटाक से 50 points 40 points मिला लेके निकल गए. But by selling you will make more money, because that is how it is working. Next, I want to also tell you what is the overall trend by looking at an indicator which we know as Ichimoku cloud. Shall we enter into the world of Ichimoku cloud? So this is Ichimoku cloud, and I'm going to apply this indicator on 1 hour chart. ठीक है, यहाँ पर हमने ये इंडिकेटर अप्लाई किया Ichimoku cloud. Are you able to see me? So यहाँ पर very importantly that you have to understand कि overall जो trend है बाजार में, it had been on the downside right from the top here, and यहाँ पर एक वेव कंप्लीट हुआ. Okay, if you know neo wave, ये neo wave के हिसाब से, so there are people who are asking what about 5 waves down. That was purely from Elliott wave perspective.
it was counted as impulse, but this is from a neo wave perspective. I'm counting this as a very, very clear diametric fall on the downside. From here, 17220 is the level which I have been talking about should be broken multiple times. I have told 17220 break होना चाहिए, लेकिन निफ्टी यहां से फेल हो गया, ब्रेक नहीं किया बिकॉज उसके आसपास ही गेन लेवल था. Now it has come down below the Ichimoku cloud again, which means there is a possibility we might be completing something at the top. इसका information या confirmation कब मिलेगा? Once we break below this level. This is a very crucial level on the downside. जो break होने पे हमें और confirmation मिलेगा, which is 16,850. So 16,850 is an important level. Now I want to ask the wave practitioners, neo wave practitioners, are you guys here with me? Suppose if this was wave A, B ने बहुत कम time लिया है compared to wave A, but if still B wave breaks complete हो गया, which pattern do you think is forming? It's too soon to say B complete हो गया. I need a break below 16,850 to conclude that. लेकिन अगर B complete हो गया, which pattern will it form? Zigzag pattern नहीं होगा, because in case of a zigzag pattern, B, this is purely from neo wave perspective, guys. B should take more time than wave A. Flat नहीं होगा. B should be 61.8% of wave A. So it has to be only two possible patterns remain. If 16,850 breaks, it will be either a diametric down with the C starting one, or it will be a triangle pattern. ठीक है? So दो ही possibility open हो जाएगी. Either a triangle, maybe an extracting triangle, not a normal triangle, or a diametric. So when is this confirmed? Once we break below 16,850, which means if 16,850 is broken, then Nifty will not break 17,200 levels in an ideal case scenario for around 3-4 days again. तो मतलब मेरे लिए ट्रेड करने के लिए बहुत ही क्लासिक इंफॉर्मेशन वेव थियरी पे से भी मिल गई. तो वेव थियरी कंबाइन करना है हमें इचिमोको क्लाउड के साथ में. सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज, this is neo wave with Ichimoku cloud on an hourly chart we are seeing. We can also use this on 15 minutes chart, and if you use this on a 15-minute chart, you will be able to see it working much better also. तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, what more information do you have? I'm asking you, let's make it more interactive. What more information are you getting from here? Basis of this pattern. अभी path क्या हो सकता है? Okay, so what is on this basis? What should be the path? So now, very, very crucial is 17,040 वापस क्रॉस नहीं होना चाहिए. That's one. For us to stay bearish. And guys, I will change my stand from bearish to bullish very quickly. So do not think यार अभी सुबह तक तो bullish था, अभी bearish हो गया. I don't care. मार्केट का प्राइस एक्शन देखो ना. लेवल कौन सा निकालना था? 17,000. इनफैक्ट मैंने सुबह एक लेवल भी दिया था, वो लेवल भी नहीं निकाला. 17,140. After it formed a low, I mentioned that it should now take out 17,140, 180 levels for something to happen. नहीं निकाला. So which means that the overall trend had been bearish since morning. If you look at an hourly chart, very classic, not a single candle from yesterday we have seen a close above prior candle high. I'm going to do this in much detail on Sunday at 11 am. Sunday को एक exclusive webinar रख रहा हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए मैं. I'm going to explain this concept of candlestick price action with Elliott wave and time on Sunday. So we will do that very quickly on Sunday. Now यहाँ पे चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे. If you're looking at the 15-minute chart, let me do one thing. Let me open up another clean layout so that you will be able to see this chart much better without anything else. So मैं एक layout open कर रहा हूँ. Just give me a second.
and we will put only Ichimoku cloud on that level. So यहाँ पर 15 मिनट चार्ट है, यहाँ पर मैं अभी डालूंगा Ichimoku cloud. It's a very classic indicator. We will be doing it in much detail later. So यहाँ पर once you see this setup, what is the trade setup on this? The count that you see here is basis of Elliott. यहाँ पर अगर आप देखेंगे, once we see bridge below the cloud, okay, once we see the bridge below the cloud, that's not where you short, you wait. After that it will retest. It will retest. होता क्या है ना, there is a tug of war between bulls and bears, and this is a fortress. You should look Ichimoku cloud like a fortress. Fortress मतलब होता है यार allow करना ही नहीं, कुछ भी हो जाए मैं allow नहीं करूंगा ऊपर आना. So these are 4 levels of defense that the bears have, and they managed to defend prices, not allowing it to go above this level today. Once that retest and reversal from there happens, you get a classic opportunity to sell here or a little lower, depends on your trading style, and keeping the high as a stop loss. That's a trade setup on Ichimoku cloud. We'll be doing this trade setup on Ichimoku cloud with KST indicator, all of those things in an option trading program, because options में ये बहुत ज्यादा important technique है. बट फिलहाल के लिए अगर मैं देखूं मेरा व्यू क्या बन रहा है मार्केट में, व्यू फिलहाल के लिए बेरिश है. इसके क्या कारण है कि एक भी आवरली कैंडल बंद नहीं हुआ, डेली बेरिश टर्न हो चुका है, वीकली ऑलरेडी बेरिश है, मंथली भी बेरिश है. साथ ही में आज का जो मूव था 17,000 ब्रेक होके नीचे बंद हुआ. अलॉन्ग विथ वेव थियरी अगर हम देखें, द मूव ऑन द डाउन साइड हैड बीन शार्प फास्ट. सो आई विल इनिशिएट शॉर्ट पोजीशंस हियर. Once this level is breached, I know for sure once this level is breached, we know that now it's not going to possibly move back about the level of 17,200. With that information and also short term time cycle, जैसे मैंने बताया 9:30 का एक टाइम था, वो टाइम से बाउंस बैक आया, which was this level. Exactly देखो 9:30, ये कैंडल आप जाके देखो दोस्तों, ये 9:30 है. इनफैक्ट 5 मिनट का कैंडल भी आप जाके देखोगे तो 9:30 एट टाइम्स इट इज सो डैम एक्यूरेट टू द मिनट. दैट्स 9:30 and we can see a very sharp bounce back from that 9:30 level which formed here, came up and then reversed back on the downside over here. That is what we can clearly see. So the time is on the sell. As per the logic of time, we should now not break above even this level, which is 17,100, जो आज का हाई था. Unless 17,100 is taken out, use pullback to sell. Now what can be the target? Short term intraday में 16,860, 16,870 के आसपास का टारगेट हो सकता है. थोड़ा मीडियम टर्म के लिए हमें देखना पड़ेगा कि क्या ये 850 का लेवल ब्रीच होता है. So what is the path ahead from that? The path ahead will be sell on rise unless we break 17,100 level, which means that for me the strategy should be sell as long as 17,100 is intact. थोड़ा सा न्यूज ड्रिवन मार्केट है, यूएस में अगर कुछ मूव आता है तो यहाँ पर भी मूवमेंट आता है, तो डेफिनेटली वो रिस्क तो है. तो ऐसे टाइम पे आप कैसे राइड कर सकते हो? मे बी यू कैन स्टार्ट सेलिंग अक्रॉस 17,200 पॉइंट्स, सो दैट पुल बैक भी आ रहा है तो भी चलेगा, नहीं भी आया तो भी चलेगा, टाइम पास किया तो भी चलेगा. तो देयर आर मल्टीपल वेज इन विच नाउ यू विल बी एबल टू सस्टेन इवन इफ देयर इज अ पुल बैक. So you can think of selling call options and riding the trend. If you are strongly bearish, once 16,850 is broken, I will be strongly bearish. In that case, once, because I know C is going on, but then I might be late to enter. So if I am late to enter, I will wait. For what? Let it come down. Let it come up, sorry. Once it comes up, reverses back on the downside, that will be a classic position for me to now start buying put options aggressively. So, you know, these are different ways in you which you have to possibly identify and trade the market. So as per the cloud hourly, the trend has changed on the down. 15 minutes cloud, trend has changed on the down. And basis of the overall 55 days time cycle, it is down.
basis of 15 minutes time cycle, it is down. Now only thing is price action also confirmed. So when time and price in sync, take the trade, and that's what I did. So I took the trade by way of selling call options because current market में एक possibility अभी भी open है. वो क्या possibility कि ये जो pullback था on the upside was only wave A. Now this could have been wave B. ये बोलना थोड़ा मुश्किल है इस टाइम पे कि ये wave B नीचे आ रहा है of a B leg, या ये पूरा B यहाँ पर ही complete हो गया. So that's the question in mind, which means I'm not sure about the pattern under formation. Since I'm not sure about the pattern under formation, I am now selling option, because even if I am wrong, I will make money. Are you getting it, guys? I'm not sure कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, because I don't see anyone checking here. Okay, net guess का time cycle भी नहीं. I will have to check net guess. I don't really recollect क्या time cycle था, but time cycle is working like magic. Thanks for sharing that across. So that is what I am trying to make sense out of the current market. So this is how, guys, you combine open interest, you combine wave theory, you look at Ichimoku cloud, and it's not about confusion. It is about clarity. लोगों को लगता है एक ही चीज यूज करो, एक ही टाइम फ्रेम चार्ट देखो, मतलब अगर आप 15 मिनट करते हो तो 15 मिनट ही देख के करो, लेकिन ऐसे नहीं होता है ना. You have to look at the primary trend, the secondary trend, the minor trends. Basis of these trends, then you decide what is your strategy going to be. So you can't just look at 115 minutes and say I'll not look at anything else. ये तो वही बात हो गई ना कि पता है आगे दलदल है लेकिन मैं आग बंद करके चलूंगा. ये तो ऐसा तो नहीं हो सकता, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए. ओके, सो यू हैव टू कंबाइन दोस थिंग्स. प्राइस एक्शन के बारे में सुरेश सैटरडे नहीं, संडे को 11 बजे 2 घंटे का एक वेबिनार मैं रख रहा हूं आप लोगों के लिए. डू यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट वेबिनार, एवरी वन ऑफ यू? सो माय कलीग विल शेयर अक्रॉस द लिंक. 2 घंटे का होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, वेयर आई विल टीच यू प्राइस एक्शन, एलियट वेव के बारे में बात करेंगे, बेसिक्स ऑफ एलियट वेव के बारे में, एंड टाइम के बारे में. सो विल क्लब ऑल ऑफ दोस थिंग्स टुगेदर. तभी 2 घंटे होंगे तो मैं आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा. ओके, विनय सिंह आज भी मैजिक चला, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट. सो इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. You also want to learn about GAN and those things. We'll be doing that in the BMW program, guys. So I just want to very quickly announce to all of you, we have a program now which is BMW Become Market Wizard जिसे कहते हैं, और इसमें हम कवर करेंगे option trading for 2 days, combining KST indicator along with that. How do we look at Bollinger Bands? How do we look at option Greeks? How do we form strategy? How do we form that passive source of income by selling option? How do we buy options? When do we buy options? कैसे एक्सपायरी डे पे ट्रेड करें? ये सारी चीजें होगी ऑप्शन ट्रेडिंग यूजिंग टेक्निकल एनालिसिस में, और साथ में होगा मास्टर ऑफ वेव्स. ये दोनों को कंबाइन करके हम कहते हैं BMW प्रोग्राम, बिकम मार्केट विजार्ड. BMW मतलब बिकम मार्केट विजार्ड. तो ये होने वाला है, इसका अर्ली बर्ड दोस्तों एंड होने वाला है 30th मार्च को. सो इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस program that I am talking about, you can simply know more on the page here. I'll share that across with you all. यहाँ पर you can find more information about this program on this page. So यहाँ पर है ये information. Let me just very quickly share it across the BMW event, which I'm sharing it across over here. So that's the page you can clearly see. Okay, everyone. So I'm open for questions, and I'm also taking a very quick poll if you want to be a part of this wonderful journey with me on this BMW program. So you can be also just participating in the poll that I have taken. Kanika Sharma is saying you are the most authentic analyst at the present time. Thank you very much, Kanika. I talk my heart out. जो मुझे लगता है मैं आप लोगों को बताता हूँ. That's what I do. So that's how I am. So that's what I am doing. So ठीक है, GAN के बारे में हम डिस्कस करेंगे मास्टर ऑफ वेव्स के सेशन में. तो इफ यू आर अ पार्ट ऑफ दिस BMW प्रोग्राम, you will be a part of GAN understanding also. So you can even do that. Bishwajit is saying, I too echo with Kanika. Thank you very much, Bishwajit. It's only because of you people I enjoy coming here on Friday at 4 and talking about markets. Rajkumar is saying, first time joined, really informative session. Thanks a lot.
glad to know that. So बहुत इंटरेस्टिंग भी है एंड साथ में एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारा एक प्रीमियम टेलीग्राम कम्युनिटी है। अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं लिंक एक शेयर कर रहा हूं, लेकिन इंश्योर करिए आप फेक टेलीग्राम्स ज्वाइन ना करें। दिस इज द लिंक विच आई एम जस्ट शेयरिंग राइट नाउ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। You should avoid joining the fake telegram groups guys. So यहाँ पर ये लिंक है, आप इधर जाके देख सकते हैं, प्रीमियम टेलीग्राम कम्युनिटी लिंक है which you can possibly, so I'm just opening up, that's the page. हमारा ऑफर was until yesterday, but if in case you have missed out because काफी जन को पता नहीं था उन्होंने आज का, तो यहाँ पर ये आप जाके डायरेक्टली प्रीमियम टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते यहाँ पर। एंड अगर मेरा फ्री टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन करना है, उसकी लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा। होम पेज पे इंश्योर करिए, नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको फ्री टेलीग्राम का जो ग्रुप है ये रहा, वो ज्वाइन करिए गाइस। देयर आर फेक टेलीग्राम इन माय नेम इन एंड फेक नंबर्स के साथ, तो डू नॉट ज्वाइन एनी फेक टेलीग्राम। माय कलीग हैज शेयर्ड अक्रॉस द लिंक, थैंक्स फॉर डूइंग दैट। So do ensure you are joining only the genuine ones, because people simply are copying and trying to loot money. So please don't do that. I'm ending the poll, guys. And any questions, I'm open for taking. It's fantastic to have all of you over here. I really love talking to every one of you. And जाते जाते एक और बार मैं कहना चाहूँगा that I have won the Khiladi #1 show again this time. And thank you everyone. This is खिलाड़ियों का खिलाड़ी, which was I won last week. So इस week में पूरे month में जो जीते थे उनके साथ था, उसमें भी I am able to generate 19.75% return. So ऐसा है, and it was by giving calls I shared across. So fantastic. Monday का levels for me pull back, sell करना है जब तक 17,100 intact है। As long as 17,100 is intact, use that pullback to sell. Downside target 16,860, 16,870 का target है फिलहाल मेरा, and if 16,850 is breached, then further downside possibilities will open up. Is it clear everyone? So this is what I wanted to share across, and thank you guys. See you on Sunday. Mentees, see you tomorrow. I'll be disclosing what I did this week, how I got that 20% again, how I got 22% last time मैंने शेयर किया था, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कल हम एल्गोस भी क्रिएट करेंगे स्टॉक सिलेक्शन के लिए। So ensure mentees tomorrow at 10 AM. And for the others, exclusive free webinar is there on Sunday at 11 AM. Please be there. In 2 hours, it will transform you completely. And that is what I wanted to share across. Thank you everyone for joining in, and see you for fantastic, and see you again on Sunday at 11 AM. And do join in 10 minutes earlier. Link of Zoom will be shared across with you all. हम हाउसफुल हो जाते तो आप बाद में ज्वाइन नहीं कर पाओगे, तो इंश्योर करना दोस्तों आप 11 बजे से 10 मिनट पहले संडे को ज्वाइन करें, which is this Sunday. Thanks a lot. Have a wonderful day. Ashish Kyal signing off.